कैसे स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे ड्रग यूज्ड इन कफ। Drug used in cough are known as cough medication. The treatment depends on the type of cough, dry or productive, its case and patient's condition. तो सबसे फर्स्ट होगा क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग यूज्ड इन कफ। तो सबसे फर्स्ट आएगा इसमें कफ सुप्रेंट्स यूज्ड टू सुप्रेस ड्राई एडिटिंग कफ नॉन प्रोडक्टिव। तो इसमें जो ड्रग है टू टाइप्स के होंगे, सेंट्रल एक्टिंग एंड पेरिफेरल एक्टिंग। जो सेंट्रल एक्टिंग है वो हमारे ब्रेन सेंटर पर अफेक्ट करेंगे, जो पेरिफेरल है वो क्या करेंगे, कफ रिसेप्टर इन एयर में। तो पहले सेंट्रल एक्टिंग, इसमें आएंगे कोडेन, डेक्स्ट्रोमेथोर्पेन, कोलोकोडेन। पेरिफेरल एक्टिंग में आएगी आपकी बेंजोनेटेट, मेंथोल, हनी। Number 2, expectorants used to loosen mucus and help it is removal, useful in productive cough. Drug increase secretion, natural remedies. Bronchial make mucus thinner and easier to expel. सेकेंड में आएगा शूटिंग इफेक्ट। तो इंक्रीज सेक्रेशन में आएगा ग्यूफेनेसिन, पोटेशियम आयोडाइड। नेचुरल रेमेडीज में आएगा लिक्रोराइक, हनी, स्टीम इनहेलेशन। नंबर 3, म्यूकोलाइटिक्स used to break down thick mucus, helping clearance from airway. Drug break disulfide in mucus bound, reduced viscosity। इसमें कौन कौन सा आएगा, एसिटिल सिस्टीन, ब्रोमेहेक्सिन एंड एम्ब्रेक्सोल। Number 4, antihistamines used in cough is related to allergy or post nasal drip। ड्रग इसमें आएगी फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन। फर्स्ट की आएगी सेडेटिव एलर्जी, सेकंड की आएगी लेस सेडेटिव। सेडेटिव में आएगी डी फेनाड्रेमाइन और क्लोरफेनारेमाइन। सेकंड में आएगी लोराटेडाइन एंड सिट्राजिन। नंबर 5, ब्रोंकियो dilators used in cough is associated with asthma or bronchospasm. Drug beta 2 agonist like salbutamol, terbutaline. Anticholinergic lepratropium bromide. Number 6, corticosteroids used in chronic cough and related to inflammation such as asthma or COPD. Root example, inhaled budesonide, fluticasone. Oral prednisone.